ऑलराइट, वी गो टू नेक्स्ट किंगडम विच इज किंगडम फंगाई। जब हम किंगडम फंगाई के बारे में बात करते हैं, ये एक बहुत ही वन ऑफ द बिगेस्ट किंगडम है, ठीक है। ऑफ कोर्स प्लांटे एंड एनिमेलिया इज वन ऑफ इज द बिगेस्ट, बट देन अब तक जो हम पढ़े उसमें सबसे बड़ा जो होता है वो फंगाई होता है, जिसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस दिखाई देंगे, ठीक है। जो फंगाई होते हैं ये हेटेरोट्रोफिक किंगडम है, मल्टी सेल्यूलर, सबसे पहला मल्टी सेल्यूलर किंगडम हो गया है ये बेटा। ये पैरासाइटिक भी होते हैं, ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं और ये सिम्बायोटिक भी होते हैं, ठीक है। ये जनरली कॉस्मोपॉलिटियन होंगे, यानी हर जगह पे पाए जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि ये सिम्बायोटिक होते हैं तो दे कैन शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद algae, example being lichens. They can show symbiotic association with the roots of higher plants, which are called as mycorrhiza, ठीक है। Generally, when we talk about its diversity, so they can be found in different locations. They can be found in air, they can be found in water, soil, also inside and on the surface of living organisms. जब हम बात करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बेटा, तो फंगस जो होता है उसके मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटीज भी बहुत सारे दिखते हैं, विच इज, जब हम फंगस के बारे में बात करेंगे, सो फंगस इज कंपोज्ड ऑफ माइसीलियम विच इज नथिंग बट नेटवर्क ऑफ हाइफे। यानी अगर ये हमारा फंगस हो गया, ये मशरूम होता है कुछ इस प्रकार से बेटा, तो इसके अंदर यू विल हैव अ filamentous structure which is completely coiled and there's network of this filamentous structure। तो ये जो filamentous structure का network होता है बेटा, इस network को हम mycelium कहते हैं और filamentous structure को हम कहते हैं hyphae। Are we clear? यहां तक समझ पाए? तो जो mycelium या फिर hyphae होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये सिनोसाइटिक होंगे जिसे हम असेप्टेट भी कह सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, असेप्टेट होगा ये, ठीक है, या फिर वो सेप्टेड एंड ब्रांच्ड होंगे। सिनोसाइटिक यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ये बेटा। तो एज वी कैन सी ओवर हियर कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा विद लॉट्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन देम, बट देन that nucleus do not have individual cell wall, you have one common cell wall which is they will be multinucleated। इस प्रकार का हाइफे फाइकोमाइसिटिस में दिखाई देता है, जबकि सेप्टेड एंड ब्रांच्ड हाइफे यानी जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड हाइफे जो होता है ये हमको बाकी सारे यानी बाकी तीनों फंगल क्लास में दिखाई देगा, इन क्लास फाइकोमाइसिटिस, बैसिडोमाइसिटिस एज वेल एज ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है। If I zoom this structure, you'll be able to observe it clearly that they generally have a long thread-like slender structure which is filamentous in nature। जनरली इनके सेल्स जो है वो डिवाइडेड होते हैं, डिवीजन को हम सेप्टा कहते हैं, साइंटिफिकली दोज आर क्रॉस वॉल्स यानी ऐसे आड़ी लाइन होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओके, ये हो गया हमारा फंगाई के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। ये अलग अलग प्रकार के डिजीज कॉज कर सकता है बेटा। तो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज म्यूकर विच इज ब्रेड मोल्ड बीइंग द एग्जांपल। You have Alternaria, which causes orange rot disease in orange, of course. You have Puccinia, which causes wheat rust infection, as we can see over here. You have rusty dots that are observed on the surface of leaves. You can have something called as white spots on mustard leaves or crucifers, which is called as white rust infection or white rust disease caused because of albugo, very important for your need examination। जरूरी नहीं है कि सारे इन्फेक्शन ही कॉज करे, सम ऑफ देम आर यूजफुल आल्सो, लाइक यू हैव ईस्ट, स्पेसिफिकली Saccharomyces cerevisiae, that is used for brewing as well as baking industry। so brewers yeast and bakers yeast होता है। you have Penicillium notatum which is involved in penicillin, that is antibiotic production। some of the funguses are poisonous, which is mushroom toadstool, which is poisonous and non-edible, whereas some of the mushrooms are edible in nature, for example agaricus, जो तुमको डोमिनोज के पिज्जा के ऊपर टॉपिंग्स में मिलते हैं। फंगस जो होते हैं इनके अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया जाए तो ये अलग अलग प्रकार से रिप्रोडक्शन कर सकता है।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वो फ्रैगमेंटेशन कर सकता है, जो काफी ज्यादा कॉमन है सारे फंगस के अंदर। कभी कभार वो फिजन भी कर देता है, लाइक फॉर एग्जांपल इन ईस्ट। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली वो एसेक्सुअल स्पोर्स बनाता है। तो 3 प्रकार के एसेक्सुअल स्पोर्स वो बनाने की काबिलियत रखता है। यू हैव समथिंग कॉल्ड एज जूस्पोर्स, कोनीडिया एंड अप्लानोस्पोर्स। ठीक है। जूस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, कोनीडिया अगेन इज अ नॉन मोटाइल स्पोर्स। Zoospores and aplanospores can together be identified as sporangiospores because जनरली ये स्पोरांजियम में पैक्ड होता है, इस वजह से इसे स्पोरांजियोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वो स्पोर्स बनाएगा, और जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनाता है तो ये 3 प्रकार के स्पोर्स बनाने की काबिलियत रखता है। या तो वो अस्पोस्पोर बनाएगा, या वो बेसिडियोस्पोर बनाएगा, या oospore बनाएगा। ऑलराइट, गोइंग अहेड। तो जब हम हाइफे का बात करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं बेटा, जो फंगस होते हैं इनके अंदर मेल और फीमेल हाइफे सिलेक्ट किया जाता है। मेल hyphae is identified as Entheridium, which will have male spores present. Female hyphae will be identified as Oogonium, will be having female spores. जब ये दोनों स्पोर्स फ्यूज हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी, where there is fusion of cytoplasm. Slowly and gradually, after the fusion of cytoplasm, you will have fusion of nucleus, which is called as karyogamy, beta. ठीक है? Fusion of nucleus is called as karyogamy. When you have fusion of nucleus been occurred, ठीक है, जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है बेटा, काफी बार ऐसा होता है कि साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाने के बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। जब न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अल्टीमेटली तो होगा बट इनिशियल लेवल पे नहीं होता है, तो उस पर्टिकुलर फेस को हम कहते हैं डाइकैरियो फेस। द फेस इज कॉल्ड एज डाइकैरियो फेस एंड द सेल इज कॉल्ड एज डाइकैरियोन। This dikaryon phase or dikaryo phase can be seen in ascomycetes and basidiomycetes, but it is not seen in your deuteromycetes and phycomycetes. ठीक है। You have something called as karyogamy which occurs, जिसकी वजह से अब हमें एक डिप्लॉइड सेल मिल जाएगा। ठीक है। ये डिप्लॉइड सेल्स को ऑफ कोर्स हम जाइगोट कहेंगे। This then undergoes meiosis which is called as zygotic meiosis, और ये मियोसिस करके हमको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मियोसिस करके हमको वो स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे एंड इट विल फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज माइसीलियम, एंड thus the fungus are always haploid in nature. The fungus are always haploid in nature. कभी कभार किसी किसी ऑर्गेनिजम्स, किसी किसी फंगस में, स्पेसिफिकली फाइकोमाइसीट्स में अगर हम बात करें बेटा, फाइकोमाइसीट्स का बात करें तो फाइकोमाइसीट्स में जाइगोट जो है वो मियोसिस करने की जगह पे माइटोसिस करता है एंड इट प्रोड्यूसेस और इट गेट्स डिफरेंशिएटेड टू समथिंग कॉल्ड एज जाइगोस्पोर्स और oospores. ठीक है। Fungus can further be classified into 4 classes based on the mycelium, the type of spore that is formed, and also the type of fruiting body that is it has. This is a PYQ question. This was asked in past year, so please make sure that you all know this concept very well. All right, beta. Let's go ahead to understand each of this class of fungi one by one. Very firstly, we go ahead to understand about phycomycetes. तो जब हम phycomycetes का बात करते हैं, इसको हम algal fungi भी कहते हैं। क्यों algal fungi कहते हैं ये थोड़ी देर में बताता हूं मैं आपको। ठीक है। जनरली ये एक्वेटिक होते हैं, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। They can also grow in moist wooden logs, which is damp places पे. They can also be found as obligate parasites on the plant. ठीक है। Their mycelium is cenocytic and aseptate in nature. As we said, this is one of the most primitive fungi, and that's why their mycelium will be cenocytic and aseptate. For reproduction, they will show asexual reproduction by production of something called a sporangiospore. They will not have conidia, beta. They will not have conidia. जब हम स्पोरांजियोस्पोर के बारे में बात करते हैं तो वो मोटाइल स्पोर भी बनाने की काबिलियत रखता है
और वो नॉन मोटाइल स्पोर भी बनाने की काबिलियत रखता है. But this will be present in something called as zoosporangia. ठीक है. Zoospores will be produced in zoosporangia, यानी एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर ये स्पोर्स होंगे, मोटाइल स्पोर्स. Thus these are said to be endogenous in nature. ठीक है. The spores are thus identified to be as endogenous in nature. जब बात आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो अलगे की तरह ये दो प्रकार के गैमीट्स बनाने की काबिलियत रखता है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट. These male and female gamete can be isogamous type, यानी जिनमें दोनों स्पोर्स जो मेल और फीमेल गैमीट्स होंगे वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे, सेम साइज, सेम शेप, बोथ मोटाइल और नॉन मोटाइल. They can be an isogamous type, यानी same shape but different size, both can be motile or non-motile. Or they can produce oogamous type of gamete, यानी कि they will, in them the female will be larger in size and non-motile, males will be smaller in size and motile in nature. All right, beta. These phycomycetes can further be classified into two subclasses, which is zygomycetes and oomycetes, but this is not in our syllabus, so we will not discuss that. ये जो फाइकोमाइसीट्स होते हैं, इसके तीन एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं. एक राइजोस्पोर, sorry, rhizopus, which is bread mold. You have mucor, which is also a type of bread mold. You have albugo, which is parasitic that forms white spots on mustard leaves, which is white rust infection. This we have already done earlier. This was all that we had to understand about phycomycetes. Going ahead for ascomycetes, which are sac fungi, beta. इसको sac fungi. अच्छा, I forgot to mention. इसे हम algae like fungi क्यों कहते हैं? Because algae की ही तरह ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous प्रोड्यूस करता है, इसलिए these are algal fungi. Ascomycetes are called as sac fungi because इसका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है या पूरा बॉडी जो होता है वो सैक जैसा होता है, और सैक जैसा बॉडी होने की वजह से यू कॉल इट एज सैक फंगाई. ठीक है. ये सैप्रोफाइट हो सकते हैं, डिकम्पोजर हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, और ये कॉप्रोफाइलस होते हैं. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें याद रखना है. दीज आर कॉप्रोफाइलस मीनिंग दे टेंड टू ग्रो इन समथिंग कॉल्ड एज काउ डंग. ठीक है. और एनी काइंड ऑफ डंग, बेसिकली नॉट जस्ट काउ डंग बट एनी टाइप ऑफ डंग में इट कैन इजिली ग्रो. इनका जो माइसिलियम होता है ये सेप्टेट और ब्रांच्ड होगा. ठीक है. एंड रिप्रोडक्शन के लिए they tend to produce something called as conidia, asexual spore which is called as conidia, which is generally said to be produced on specialized hyphae, which is called as conidiophore. Okay, it is produced on specialized hyphae which is called as conidiophore. As we can see over here, this is conidiophore, beta. And this what you observe. So it is basically this being conidiophore, और इसके ऊपर you will have conidia which is attached. क्या ये कोनीडिया किसी बैग में पैक्ड है? तो my answer is no. That's why we say that this is exogenous in nature. Whereas sexual spores जो होते हैं वो endogenously produce किए जाते हैं बेटा, within, that is ascospores जो होते हैं, it is present in a sac which is called as asci, and this sac is present on the fruiting body which is called as ascocarp. The fruiting body is called as ascocarp. यानी एक बेसिकली सैक जैसा स्ट्रक्चर होगा बेटा, यहाँ पे कर देता हूँ, एक सैक जैसा स्ट्रक्चर होगा और इस सैक जैसे स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स पाए जाएंगे. Thus these are endogenous in nature. All right. Examples for ascomycetes will include multiple of them. You have Penicillium notatum, which is responsible for antibiotic production. You have Aspergillus, from which different organic acids can be obtained. You have Neurospora, from which has been used in genetic and biochemical or biochemistry studies.
Clavisap, which is poisonous in nature, it causes different types of infection. It is parasitic in nature. Yeast, which is involved in the baking as well as brewing industry. And this is the only unicellular algae that we have, or unicellular fungi that we have, okay, which do not produce hyphae as such. Okay. You have edible fungi also belonging to them, which is morels and truffles. All right, beta. That was it with regarding ascomycetes. We go further to understand about basidiomycetes. This is the life cycle that can be observed very easily. That you have spores which are produced. They germinate to form a fungi having male and female hyphae. The cells of these hyphae fuse together to form plasmogamy. Plasmogamy further forms karyogamy is being done, where you will have an ascus which has been produced, that is fruiting body is produced. That ascus, which is a fruiting body, will be having ascospores present in them, sorry, sac-like structure, and this will further develop into a fruiting body which is called as ascocarp. You have basidiomycetes which is also called as club fungi. इसे club fungi इसलिए कहा जाता है because इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो क्लब जैसा होता है, जो पत्ते खेलते हैं उसमें जो क्लब होता है उसके जैसा इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, thus it is also called as club fungi. They are found in both soil as well as in living organisms. They are parasitic in nature. Their mycelium will again be septate and branched like ascomycetes. Reproduction may they will show vegetative reproduction by fragmentation. Unfortunately, they do not have any asexual reproduction seen in them. इनमें asexual reproduction नहीं दिखता है, but sexual reproduction दिखेगा. जिसमें भी problem है कि sex organs are absent in them. So generally they reproduce with the help of body cells, that is somatic cells or vegetative cells. ये जो ये जो बेसिडियोमाइसीट्स होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे वेराइटीज इंक्लूड किए जा सकते हैं, which is it can include varieties like mushrooms are included in them. Okay, you can have something called as mushrooms present in them. Mushrooms के साथ साथ if I have to give you an example, so you also have something called as rust which is present in them. You have smut which is present in them. ये अलग अलग कैटेगरीज के फंगस हो गए जो इनके अंदर दिखाई दिए जाते हैं. ठीक है. Here we can easily identify them with their examples. ठीक है. You have bracket fungi which is very commonly seen. ठीक है. You have agaricus that has been observed. Agaricus का edible mushroom हो गया ये बेटा. ठीक है. जिसका edible part will be basidiocarp. Complete basidiocarp is edible and it is umbrella shaped in nature as we can see over here. You have toadstool that is included over here, which is poisonous mushroom, which are non-edible. You have Puccinia, which is rust fungi, causes wheat rust infection. You have Eustaligo, which is a smut fungi, which causes smut in maize. All right. With that, we end with your basidiomycetes. This is the life cycle. You have deuteromycetes, which is another and last fungi class that we need to study for now. When we talk about deuteromyces, this is called as imperfect fungi. Why is it called as imperfect fungi? Because sexual reproduction काफी अजीब सा करता है ये, इस वजह से इसे imperfect fungi कहते हैं. आगे आपको समझाता हूँ क्या और कौन सा abnormality दिखता है. जब ड्यूटेरोमाइसिस के बारे में बात करते हैं तो इस ड्यूटेरोमाइसिस में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स में से कुछ पैरासाइटिक हो सकते हैं, कुछ सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, कुछ कॉप्रोफाइलस भी होते हैं बेटा. सम ऑफ देम आर कॉप्रोफाइलस आल्सो, रिमेंबर दैट. सम ऑफ देम आर कॉप्रोफाइलस आल्सो. ठीक है. However, most of them are decomposers that helps in decomposition of litters and they also help in mineral cycling in environment. Very very important, they help in mineral cycling in environment. इनका जो माइसिलियम होता है that will be septate and branched as we have spoken so far. रिप्रोडक्शन के लिए वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है फ्रैगमेंटेशन के द्वारा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है कोनिडिया के द्वारा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट येट डिस्कवर्ड. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडियली होता ही नहीं है. ठीक है. दे आर सेड टू बी इम्परफेक्ट बिकॉज जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करता है वो
या तो अस्कोस्पोर बना देता है या बेसिडियोस्पोर बना देता है। अगर अस्कोस्पोर बनाएंगे तो उसको यहां से हटा के अस्कोमाइसीट्स में प्लेस किया जाएगा, उनके प्रोजेनिस को, ठीक है। और अगर बेसिडियोस्पोर बनाया तो उनको ड्यूटेरोमाइसिट से हटा के बेसिडियोमाइसिट्स में डाल दिया जाएगा, है ना। अब क्योंकि ये इस प्रकार का विचित्र रिप्रोडक्शन करता है जहां पे वो खुद के स्पोर्स बनाने के अलावा किसी और के स्पोर्स बना देता है, इस वजह से इसे हम इम्परफेक्ट फंजाई घोषित करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा कैट विच इज कोलैटोट्राइकम दैट कॉजेस रेड रॉट ऑफ शुगरकेन, अल्टरनेरिया विच कॉजेस अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एंड ट्राइकोडर्मा जो जनरली स्किन इन्फेक्शन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट